ओके। सेशन लाइव हो गया है। सो सरवैत पार्टिसिपेंट्स का वेट करें। सर 2 मिनट वेट कर लें। 1:05 पे शुरू करते हैं। अच्छा, आज हम जो है ना वो एक कंप्लीट एक टेस्ट करेंगे। तो लाइक उसमें हम बीच में रुकेंगे नहीं, स्टॉप नहीं करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या स्कोर होता है। तो हम एक कंप्लीट टेक्स्ट टेस्ट जो मॉक होता टेस्ट होगा, है हाँ। 30 मिनट्स जो होगा, वो हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं आज। आफ्टर द टेस्ट वी विल डिस्कस। और फिर उसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे हम बेटर परफॉर्म कर सकते थे, और डिस्कस कर लेंगे कि किस पार्टिसिपेंट की कहाँ पे मिस्टेक हुई और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसको फिर आगे डिस्कस कर लेंगे। सर 105 तो हो गया है। ये सर स्टार्ट करते हैं, आप स्क्रीन शेयर करके अच्छा। स्टार्ट करें। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मुझे बस। स्क्रीन। अच्छा, ड्यूरिंग द टेस्ट आप लोग ना लाइक कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई चीज़ क्वेश्चन लाइक सर अगर कोई गलत जगह गलत इंटर कर रहे हो तो आप जो है वो चैट में जो है आपको जो लग रहा हो वो आप इंटर कर सकते हैं। तो बाकी ये कि इस टेस्ट में हम बीच में रुकेंगे नहीं। वी विल मेक। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो है, इसमें मैं फिल करूँ फिर आंसर्स, या अपने पास लिखता जाऊँ कहीं। नहीं सर, आप फिल करते जाएं आप। ठीक है, बस और वो फिर बाकी लोग भी अगर ये जो, हाँ। अपने एंड पे अगर ये टेस्ट ओपन कर लें तो वो ज़्यादा एक बेहतर अप्रोच रहेगी कि वो अपनी स्क्रीन से देख के ना करते जाएं। या नहीं तो ये है कि अ, सर के साथ अ, सॉल्व करते जाएं और नोट डाउन करते जाएं अपने पास आंसर्स। अभी कैम्ब्रिज 14 से फिर कर लेते हैं, टेस्ट 2 मैंने। जिससे कैम्ब्रिज 14 टेस्ट 2 कर लें। ठीक हो गया, तो फिर स्टार्ट करें बस फिर। यस सर, स्टार्ट कर दें। ओके, हियर वी गो। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया तो उनको मैं बताता चलूं कि हम जो है आज एक कंप्लीट टेस्ट करेंगे अंडर एग्जाम कंडीशन 30 मिनट्स के अंदर। तो इसमें यह है कि हम बीच में स्टॉप नहीं करेंगे फीडबैक के लिए या क्वेश्चंस वगैरह के लिए। हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या कहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुई है या जो भी सारा कुछ। तो स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या हाउ वी परफॉर्म। ओके, सो लेट्स गो देन, हियर वी गो। This is the IELTS listening test, 2019. Part 1. You will hear a woman talking to a doctor at a clinic about a medical problem. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen and answer questions 1 to 4. Hi, come and take a seat. Thank you. My name's Carl Rogers and I'm one of the doctors here at the Total Health Clinic. So I understand this is your first visit to the clinic. Yes, it is. Okay, well I hope you'll be very happy with the service you receive here. So if it's all right with you, I'll take a few details to help me give you the best possible service. Sure.
So can I check, first of all, that we have the correct personal details for you? So your full name is Julie Ann Garcia. That's correct. Perfect. And can I have a contact phone number? It's 219-442-9785. Okay, and then can I just check that we have the correct date of birth? October 10th, 1992. Oh, I actually have 1991. I'll just correct that now. Right, so that's all good. Now I just need a few more personal details. Do you have an occupation, either full-time or part-time? Yes, I work full-time in Esterhazy's, you know, the restaurant chain. I started off as a waitress there a few years ago, and I'm a manager now. Oh, I know them. Yeah, they're down on 114th Street, aren't they? That's right. Yeah, I've been there a few times. I just love their salads. That's good to hear. Right, so one more thing I need to know before we talk about why you're here, Julie, and that's the name of your insurance company. It's Cawley Life Insurance. That's Cawley. Excellent. Thank you so much. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Now, Julie, let's look at how we can help you. So tell me a little about what brought you here today. Well, I've been getting a pain in my knee, the left one. Not very serious at first, but it's gotten worse. So I thought I ought to see someone about it. That's certainly the right decision. So how long have you been aware of this pain? Is it just a few days, or is it longer than that? Longer. It's been worse for the last couple of days, but it's 3 weeks since I first noticed it. It came on quite gradually, though, so I kind of ignored it at first. And have you taken any medication yourself or treated it in any way? Yeah, I've been taking medication to deal with the pain, Tylenol, and that works okay for a few hours, but I don't like to keep taking it. Okay. And what about heat treatment? Have you tried applying heat at all? No, but I have been using ice on it for the last few days. And does that seem to help the pain at all? A little, yes. Good. Now, you look as if you're quite fit normally. I am, yes. So do you do any sport on a regular basis? Yes, I play a lot of tennis. I belong to a club, so I go there a lot. I'm quite competitive, so I enjoy that side of it as well as the exercise, but I haven't gone since this started. Sure. And do you do any other types of exercise? Yeah, I sometimes do a little swimming, but usually just when I'm on vacation. But normally I go running a few times a week, maybe 3 or 4 times. Hmm. So your legs are getting quite a pounding, but you haven't had any problems up to now. No, not with my legs. I did have an accident last year when I slipped and hurt my shoulder, but that's better now. Excellent. And do you have any allergies? No, none that I'm aware of. And do you take any medication on a regular basis? Well, I take vitamins, but that's all. I'm generally very healthy. Okay. Well, let's have a closer look and see what might be causing this problem. If you can just get up. That is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1.
Part 2. You will hear a guide talking to a group of tourists who are about to visit an English castle. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. We'll be arriving at Branley Castle in about 5 minutes. But before we get there, I'll give you a little information about the castle and what our visit will include. So, in fact, there's been a castle on this site for over 1100 years. The first building was a fort constructed in 914 AD for defence against Danish invaders by King Alfred the Great's daughter, who ruled England at the time. In the following century, after the Normans conquered England, the land was given to a nobleman called Richard de Vere, and he built a castle there that stayed in the de Vere family for over 400 years. However, when Queen Elizabeth I announced that she was going to visit the castle in 1576, it was beginning to look a bit run down. And it was decided that rather than repair the guest rooms, they'd make a new house for her, out of wood, next to the main hall. She stayed there for 4 nights, and apparently it was very luxurious. But unfortunately, it was destroyed a few years later by fire. In the 17th century, the castle belonged to the wealthy Fennis family, who enlarged it and made it more comfortable. However, by 1982, the Fennis family could no longer afford to maintain the castle, even though they received government support, and they put it on the market. It was eventually taken over by a company who owned a number of amusement parks. But when we get there, I think you'll see that they've managed to retain the original atmosphere of the castle. When you go inside, you'll find that in the staterooms, there are lifelike moving wax models dressed in costumes of different periods in the past, which even carry on conversations together. As well as that, in every room, there are booklets giving information about what the room was used for and the history of the objects and furniture it contains. The castle park's quite extensive. At one time, sheep were kept there, and in the 19th century, the owners had a little zoo with animals like rabbits and even a baby elephant. Nowadays, the old zoo buildings are used for public displays of paintings and sculpture. The park also has some beautiful trees, though the oldest of all, which dated back 800 years, was sadly blown down in 1987. Now, you're free to wander around on your own until 4:30, but then, at the end of our visit, we'll all meet together at the bottom of the great staircase. We'll then go on to the long gallery, where there's a wonderful collection of photographs showing the family who owned the castle 100 years ago having tea and cakes in the conservatory. And we'll then take you to the same place where afternoon tea will be served to you. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall.
That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century. If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m, there's a short performance of traditional dancing on the outdoor stage. That's right at the other side of the castle from the entrance and over the bridge. It's about 10 minutes walk or so. And finally, the shop. It's actually inside one of the towers, but the way in is from the outside. Just take the first left after the main entrance, go down the path and take the first right. It's got some lovely gifts and souvenirs. Right, so we're just arriving. That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. Part 3. You will hear 2 environmental science students, called Rosie and Martin, discussing their presentation on an extinct animal called the woolly mammoth with their tutor. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. So, Rosie and Martin, let's look at what you've got for your presentation on woolly mammoths. OK, we've got a short outline here. Thanks. So, it's about a research project in North America. Yes, but we thought we needed something general about woolly mammoths in our introduction to establish that they were related to our modern elephant, and they lived thousands of years ago in the last ice age. Maybe we could show a video clip of a cartoon about mammoths, but that'd be a bit childish. Or we could have a diagram. It could be a timeline to show when they lived, with illustrations. Or we could just show a drawing of them walking in the ice. No, let's go with your last suggestion. Good. Then you're describing the discovery of the mammoth tooth on St. Paul's Island in Alaska and why it was significant. Yes, the tooth was found by a man called Russell Graham. He picked it up from under a rock in a cave. He knew it was special. For a start, it was in really good condition, as if it had been just extracted from the animal's jawbone. Anyway, they found it was 6,500 years old. So why was that significant? Well, the mammoth bones previously found on the North American mainland were much less recent than that, so this was really amazing.
Then we're making an animated diagram to show the geography of the area in prehistoric times. So originally, St. Paul's Island wasn't an island. It was connected to the mainland, and mammoths and other animals, like bears, were able to roam around the whole area. Then the climate warmed up and the sea level began to rise, and the island got cut off from the mainland. So those mammoths on the island couldn't escape. They had to stay on the island. And in fact, the species survived there for thousands of years after they'd become extinct on the mainland. So why do you think they died out on the mainland? No one's sure. Anyway, next we'll explain how Graham and his team identified the date when the mammoths became extinct on the island. They concluded that the extinction happened 5,600 years ago, which is a very precise time for a prehistoric extinction. It's based on samples they took from mud at the bottom of a lake on the island. They analysed it to find out what had fallen in over time. Bits of plants, volcanic ash, and even DNA from the mammoths themselves. It's standard procedure, but it took nearly 2 years to do. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Now listen and answer questions 25 to 30. So why don't you quickly go through the main sections of your presentation and discuss what actions needed for each part? Okay, so for the introduction, we're using a visual. So once we've prepared that, we're done. I'm not sure. I think we need to write down all the ideas we want to include here, not just rely on memory. How we begin the presentation is so important. You're right. The discovery of the mammoth tooth is probably the most dramatic part, but we don't have that much information, only what we got from the online article. I thought maybe we could get in touch with the researcher who led the team and ask him to tell us a bit more. Great idea. What about the section with the initial questions asked by the researchers? We've got a lot on that, but we need to make it interesting. We could ask the audience to suggest some questions about it and then see how many of them we can answer. I don't think it would take too long. Yes, that would add a bit of variety. Then the section on further research carried out on the island, analysing the mud in the lake. I wonder if we've actually got too much information here. Should we cut some? I don't think so, but it's all a bit muddled at present. Yes, maybe it would be better if it followed a chronological pattern. I think so. The findings and possible explanations section is just about ready, but we need to practice it so we're sure it won't overrun. I think it should be okay, but yes, let's make sure. In the last section, relevance to the present day, you've got some good ideas, but this is where you need to move away from the ideas of others and give your own viewpoint. Okay, we'll think about that. Now, shall we show you some? That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a lecture
about the history of weather forecasting. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. In this series of lectures about the history of weather forecasting, I'll start by examining its early history. That'll be the subject of today's talk. Okay, so we'll start by going back thousands of years. Most ancient cultures had weather gods, and weather catastrophes, such as floods, played an important role in many creation myths. Generally, weather was attributed to the whims of the gods, as the wide range of weather gods in various cultures shows. For instance, there's the Egyptian sun god Ra and Thor, the Norse god of thunder and lightning. Many ancient civilizations developed rites such as dances in order to make the weather gods look kindly on them. But the weather was of daily importance. Observing the skies and drawing the correct conclusions from these observations was really important. In fact, their survival depended on it. It isn't known when people first started to observe the skies, but at around 650 BC, the Babylonians produced the first short-range weather forecasts based on their observations of clouds and other phenomena. The Chinese also recognized weather patterns, and by 300 BC, astronomers had developed a calendar which divided the year into 24 festivals, each associated with a different weather phenomenon. The ancient Greeks were the first to develop a more scientific approach to explaining the weather. The work of the philosopher and scientist Aristotle in the 4th century BC is especially noteworthy, as his ideas held sway for nearly 2,000 years. In 340 BC, he wrote a book in which he attempted to account for the formation of rain, clouds, wind, and storms. He also described celestial phenomena such as halos, that is, bright circles of light around the sun, the moon, and bright stars, and comets. Many of his observations were surprisingly accurate. For example, he believed that heat could cause water to evaporate, but he also jumped to quite a few wrong conclusions, such as that winds are breathed out by the earth. Errors like this were rectified from the Renaissance onwards. For nearly 2,000 years, Aristotle's work was accepted as the chief authority on weather theory. Alongside this, though, in the Middle Ages, weather observations were passed on in the form of proverbs, such as red sky at night, shepherd's delight, red sky in the morning, shepherd's warning. Many of these are based on very good observations and are accurate, as contemporary meteorologists have discovered. For centuries,
any attempt to forecast the weather could only be based on personal observations. But in the 15th century, scientists began to see the need for instruments. Until then, the only ones available were weather vanes to determine the wind direction and early versions of rain gauges. One of the first, invented in the 15th century, was a hygrometer, which measured humidity. This was one of many inventions that contributed to the development of weather forecasting. In 1592, the Italian scientist and inventor Galileo developed the world's first thermometer. His student Torricelli later invented the barometer, which allowed people to measure atmospheric pressure. In 1648, the French philosopher Pascal proved that pressure decreases with altitude. This discovery was verified by English astronomer Halley in 1686, and Halley was also the first person to map trade winds. This increasing ability to measure factors related to weather helped scientists to understand the atmosphere and its processes better, and they started collecting weather observation data systematically. In the 18th century, the scientist and politician Benjamin Franklin carried out work on electricity and lightning in particular, but he was also very interested in weather and studied it throughout most of his life. It was Franklin who discovered that storms generally travel from west to east. In addition to new meteorological instruments, other developments contributed to our understanding of the atmosphere. People in different locations began to keep records, and in the mid-19th century, the invention of the telegraph made it possible for these records to be collated. This led, by the end of the 19th century, to the first weather services. It was not until the early 20th century that mathematics and physics became part of meteorology. And we'll continue from that point next week. That is the end of part 4. You now have 1 minute to check your answers to part 4. अच्छा, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जो है फिर डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में, ठीक है। आंसर्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। सो कमेंट्स में आई थिंक आए भी हैं काफ़ी लोगों के। ओके, थिंक सबमिशन कर लेते हैं, ठीक है। बाकी का जो मतलब सर ये जो ब्लैंक छोड़िए, इनमें कुछ डाल दें ताकि आंसर्स का आपकी पता आवाज़। चल जाए कि वो क्या है। ठीक है। इनमें अभी मैं फिर इनको ऐसे ही फिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ताकि आंसर्स का पता चल जाए, ठीक है। करेक्ट आंसर्स इसलिए मैं नहीं डालना That चाहता is क्योंकि the ये तो end of the रह ही listening गए हैं test. वैसे भी। पता चल जाएगा इनके करेक्ट आंसर्स का। और ये वाले भी कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी ये भी रह गए थे। अच्छा, ठीक है, इसको ना देख लेते हैं अभी हम। ओके हो गया, और तो नहीं है आई थिंक सो। अच्छा, ये भी है। चलें, देख लेते हैं सबमिट करके।
हम्म। अच्छा, और कमेंट्स में, अच्छा इसकी डिस्कशंस किस तरह लेके चलें? आप लोग क्या कहते हैं कि हम सारा डिस्कस कर लें या कोई मेन जो क्वेश्चंस थे वो डिस्कस करें? सिर्फ जो लास्ट पार्ट्स वगैरह में है ना वो वाले फिर भी ठीक है, ये फर्स्ट। लास्ट पार्ट्स करने हैं डिस्कस। सर वो जो मिड वाले हैं, सॉरी, ठीक लास्ट है, लास्ट और ठीक है, जो ठीक है, ठीक है। इसमें पार्ट 1 तो काफ़ी इजी था, आपने देखा ना। और बहुत मतलब आसानी से फिल हो जाता है। देख लेते हैं, पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। मेरे आज काफ़ी गलत हो गए हैं और छूट भी गए मुझसे। तो ये देख लेते हैं। अच्छा, बिफोर क्वीन एलिजाबेथ विजिटेड द कैसल इन 1576। अच्छा, इसका है, ये ठीक लगा हुआ है बी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जी जी। से स्टार्ट में उन्होंने बता दिया था जब ये कंस्ट्रक्शन है ना कि उसने अपने मतलब फॉर हर डॉटर इस तरह कुछ मतलब वो मतलब कुछ उन्होंने बता दिया था स्टार्ट में ही। ऐसे ही है मैम। और पूरा इसमें जी जी। ऐसा बाकी जो फर्दर डिटेल में तो वो बता रहे थे कि जब इतने साल के बाद उसने विजिट किया और वो सब कुछ तो लेटर उन्होंने बताया, लेकिन जब वो बिल्कुल स्टार्ट में ना ये पॉइंट कैच कैच करने वाला था कि हम लोगों ने ना कि उसने जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ तो ये उसके लिए कंस्ट्रक्ट किया गया था। हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छा, जो डैमेज था ना, वो आई थिंक वो एलिजाबेथ के जो बिल्डिंग का हुआ था, मेन हॉल का नहीं था, है ना? एक मिनट। अ फायर डैमेज पार्ट ऑफ द मेन हॉल। आ, ये आई थिंक ये डिस्ट्रक्शन का जो है, ये एलिजाबेथ से कोई ताल्लुक रखता था, बिल्डिंग से। जो कि मैंने बाद में इसीलिए ये भी नहीं लगाया, जो कि अच्छा हुआ, ठीक भी हो गया ये। क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। ये मेन हॉल का नहीं था, कोई और डैमेज एरिया था। फायर डैमेज द पार्ट ऑफ कुछ और था यहाँ पे। एंड अगर किसी को पता भी है वो आंसर, वो शेयर कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन 1982 द कैसल वाज सोल्ड टू, उन्होंने पहले कहा कि मतलब ये आई थिंक ये ओन करती थी द फैनिस फैमिली। और गवर्नमेंट पता नहीं मतलब वो साथ में जैसे कॉपरेशन थी। बाद में जो है वो सोल्ड हुई है एंटरटेनमेंट कम, उन्होंने कुछ अम्यूजमेंट पार्ट्स की कुछ बात की थी इस तरह। तो इसलिए मैंने एंटरटेनमेंट कंपनी लगाया। ये मुझसे जो है थोड़ा छूट गया, मैं नहीं इस पे फोकस कर पाया। इन सम ऑफ द रूम्स विजिटर्स कैन, इस पे लगा हुआ, अच्छा ये हमने गलत लगाया मैंने। इंटरेक्ट विद एक्टर्स, ये है सी मॉडल्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स। हाँ, बात हो रही थी वो, हुई थी बात मॉडल्स की। तो सी मॉडल्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स मूविंग एंड टॉकिंग, ठीक हो गया। ये फर्स्ट में ही उन्होंने वो बात कर ली थी। मतलब ये बाकी के ऑप्शंस फिर थे ही नहीं। ये बस इसके थ्री ना उन्होंने ऑप्शन। ना हिस्टोरिकल का नहीं हिस्ट्री यूज किया था शायद, मुझे लग रहा है जो लास्ट में ना कि हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट हाँ, के लाइक एग्जैक्टली, तो वो हिस्टोरिकल एग्जैक्ट मैच हो रहा है उससे। एग्जैक्टली, बस वो मेरा जो है कंसंट्रेशन उस तरफ गई नहीं। इस तरह ये गलत हो गया। यही आप लोगों ने जो है ना ध्यान रखना है। अगर आप देखें इस दफा इस टेस्ट में मेरे साथ काफी जो है छूट गए हैं। वो यही था कि मेरे कंसंट्रेशन सही नहीं हो पा रही थी इसकी तरफ। तो ये आपने कंसंट्रेशन तो बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना है कि इसी तरफ हो। तो अब 14th को डिस्कस करते हैं। इन कैसल पार्क विजिटर्स कैन गो टू एन आर्ट एग्जीबिशन। अच्छा अच्छा, ये भी जो है आई थिंक इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं थी। वो एंड पे जो है थोड़ा सा करना चाह रहे थे सी एन 800 ईयर ओल्ड ट्री। लेकिन आपको पता है उन्होंने क्या कहा फिर? कि वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, कि पता नहीं मतलब उनको ब्लो ब्लो हो गई है, मतलब तबाह हो गया है, पता नहीं वो ट्री काट दिया गया इस तरह कुछ। तो ये तो बनता ही नहीं था फिर। ठीक हो गया। और फिर है एंड एट एट द एंड ऑफ द विजिट द ग्रुप विल हैव, इसमें इन्होंने द चांस, अच्छा ऑप्शन जो हमारा ठीक है वो ये सही लगा हुआ है, आफ्टरनून टी इन द कंजर्वेटरी। वो क्योंकि उन्होंने एंड पे बात की कि
हमारा मतलब हम कंजर्वेटरी में जाएंगे और उस एरिया में जाएंगे और पता नहीं वो एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद, बट उन्होंने यहीं पर ही आफ्टरनून टी की भी बात की कि सेम एरिया में हम जो हैं वो आफ्टरनून टी जो है वो करेंगे। द चांस टू मीट द कैसल ओनर्स, ये तो मुझे याद नहीं है कि इसका किस तरह जिक्र हुआ था। ठीक है, फोटोग्राफी का भी जिक्र हुआ था लेकिन वो रिलेटेड नहीं था। देन हमारे पास मैप, अच्छा इसमें किसी को है एमसीक्यूज में कुछ ऐड करना चाहता है कोई, या किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो वो पूछ लें इस पार्ट में, वरना हम मैप वाले को भी डिस्कस कर लें जल्दी से। टाइम कम है, हम पूरे मॉक टेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, मैप क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा पहले है कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर वॉकिंग द वॉल्स, ये इन्होंने जो है मेन एंट्रेंस की बात की थी कि इस तरह मेन एंट्रेंस की तरफ जाओगे साउथ गेट के पास। अब साउथ गेट के पास तो उन्होंने सी भी था ई भी था, वो मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल अटैच है, तो इस वजह से मैंने वो एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे ये पता नहीं है, लेकिन इसी तरह की वर्डिंग से वही बात आ जाती है सिनोनिम्स वगैरह की, तो वो यूज होते हैं, वो ध्यान रखना है। ये एच हमारा सही हो गया, ये दो मैं गेट ही नहीं कर पाया था। अब इनका देख लेते हैं, बो एंड एरो डिस्प्ले, बो एंड एरो डिस्प्ले का डी लगा हुआ है, जो कि उन्होंने कहा था मेन मीन्स के उन्होंने डिस्कशन की होगी कि मेन एंट्रेंस से जो है आप लेफ्ट को जाएं, और ये ब्रिज का भी हल्के मैंने, जी जी, जी जी थोड़ा सा। मैम। अब बिफोर ब्रिज था तो डी होगा, क्योंकि मैं मुझे भी ना थोड़ा सा ये हुआ कि वो मैंने ना जी लगाया है, तो वो मैं अच्छा उस आप, ब्रिज को क्रॉस करने के बाद समझी। तो वो ब्रिज से पहले वाली बात हो रही थी कि ये डी बिफोर द ब्रिज, इस तरह डायरेक्शन तो दी हुई थी। अब वो डी और जी हम्म, में थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि वो बिफोर ब्रिज है या अक्रॉस, मतलब वो अच्छा मतलब अच्छा, आफ्टर ब्रिज इस तरह। ओके ओके। अच्छा यहाँ पे मेरे साथ जो हुआ, मैं इसको सुन ही नहीं पाया, जैसे मेरी कंसंट्रेशन पता नहीं थोड़ी हड़बड़ा सी गई, तो इस वजह से आपने अगर इसको सुना था तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मैम समीना। अ, ये हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले को भी थोड़ा सा कर दें, आपके ठीक हुए हैं ये, और जिसके अगर पूरे ठीक हुए हैं वो भी ऐड करना चाहता है, वो मतलब शेयर करना चाहता है बात तो कर सकता है। हंटिंग बर्ड्स का वैसे इन्होंने एफ लगाया हुआ है, मतलब एफ ठीक है। तो ये जो है मैं इधर मेन एंट्रेंस से में भी इसकी भी इस तरह की कोई बात हुई थी। वॉइस प्ले कर दें, आप लोग क्या कहते हैं? जिस तरह एक बार ऑडियो ही कर दें, उससे ये हो जाएगा कि वो जितने भी हम सब है ना पार्टिसिपेंट्स, उनको सबको ही आ जाएगा एकदम, हाँ क्योंकि वॉइस लास्ट प्ले का, वाले तो वॉइस प्ले कर काफी देते हैं क्लियर आई थे ये। थिंक। पता नहीं अब सबके साथ है कि नहीं, मुझे लगता है थोड़ी सी ऑडियो जो थी वो थोड़ी फास्ट थी, और वो जो एक्सेंट था थोड़ा सा था, थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में हो रही थी, है ना? तो सर अगले मुझे ज्यादा फील हुई थी। कहाँ पर? सर मुझे नेक्स्ट वाले इसमें इस ये जो 21 to 25 है ना, ये मुझे सबसे मतलब डिफिकल्ट वाला काम लगता है, हाँ तो इसमें अच्छा, ज्यादा वो फास्ट। उस पे जाते हैं, हाँ फास्ट था, वो काफी फास्ट था। लिसनिंग प्रैक्टिस हमारे पास थी 14 की 2, और ये हमारे पास सेक्शन 2 है, इसको हम प्ले कर देते हैं। Now you're free to wander along gallery. Photographs showing the family who owned the castle 100 years ago will be served to you. In to 20. And you'll see Branley Castle has 4 towers joined together. And answer चलें, questions अब 16 to यहाँ 20. से हम फोकस करते हैं थोड़ा सा। Now, if you can take a look at your plans, you'll see Branley Castle has 4 towers joined together by a high wall, with the river on 2 sides. Don't miss seeing the Great Hall. That's near the river in the main tower, the biggest one, which was extended and redesigned in the 18th century.
If you want to get a good view of the whole castle, you can walk around the walls. The starting point's quite near the main entrance. Walk straight down the path until you get to the south. आप लोगों ने देखा बिल्कुल नेक्स्ट टू द साउथ गेट। तो बिल्कुल जो है नेक्स्ट जो है वो एच है बनता, इसलिए ये हमारा करेक्ट हो गया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Gate, and it's just there. Don't go on to the north gate. There's no way up from there. There'll shortly be a show in which you can see archers displaying their skill with a bow and arrow. The quickest way to get there is to take the first left after the main entrance and follow the path past the bridge. Then you'll see it in front of you at the end. अच्छा, ये आप लोगों ने देखा मतलब फॉलो द पाथ पास द ब्रिज मीन्स के जो पहले ब्रिज से पहले जो है जो आ रहा है, यानी कि ब्रिज के बाद जो है वो जी है, तो ब्रिज से पहले डी था। बस ये गेट करना था, ये वर्डिंग पे ध्यान रखना था, जो कि ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आगे चलते हैं वरना। If you like animals, there's also a display of hunting birds, falcons and eagles and so on. If you go from the main entrance in the direction of the south gate, but turn right before you get there instead of going through it, you'll see it on your right, past the first tower. At 3 p.m., there's a short performance of traditional. अच्छा मैम, ये देखा आपने, आपका ये ठीक हुआ था मैम, हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले का। मैम समीना, या किसी का भी मतलब। अच्छा चलें डिस्कस कर लेते हैं इसे। ये उन्होंने कहा कि जी जी। सर सॉरी, वो मेरी अभी ना कोई डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो मैंने नहीं नो सुना। आप प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं बस ये डिस्कस करना था, मैंने कहा आपका ये ठीक हुआ था कि नहीं। तो इसको ये एफ इसीलिए लगाया है उन्होंने यहाँ पे। अच्छा, पास द ब्रिज, पास द टावर, इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये। मतलब जैसे पहले आता है, इससे पहले आता है या इसके बाद आता है, इस तरह की चीजें, इस तरह की वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं। तो ये देखें, उन्होंने अच्छा ये भी आई थिंक कहा था कि ये आपने साउथ, इस चीज को नहीं, मतलब ये जो मैं एरो कर रहा हूँ इसको नहीं आई थिंक फॉलो करना आपने। मेन एंट्रेंस से ये जो राइट है, ये जो पाथ बना हुआ है, ये डॉटेड वाला, इसको फॉलो करते हुए तो ये एफ आता है। ये हमारे पास बनेगा हंटिंग बर्ड्स डिस्प्ले का। ट्रेडिशनल डांसिंग जो है वो ए हमारा ठीक हुआ है। वो कैसे था कि उन्होंने मेन एंट्रेंस से राइट जाने को कहा और स्ट्रेट टू द एंड, मतलब वो रिवर की भी बात हुई थी वहाँ पे। तो वो आसान हो गया था, क्योंकि अब जहाँ पे इस तरह के कंजेस्टेड हुए होते हैं ना जो लेटर्स, वहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन यहाँ मुझे अपनी पर्सनली ऐसा लगता है कि जहाँ पे ज़्यादा लेटर्स नहीं होते आपस में जुड़े हुए, वो आसान होते हैं, जल्दी से गेट किए जाते हैं जब वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अब मैंने ए लगाया हुआ है तो वो ठीक हो गया, देखें। तो अच्छा, शॉप्स की बात हो रही थी। मेन एंट्रेंस से जाते हुए उन्होंने कहा कि सीधा जाएं साउथ गेट की तरफ, और उसके लेफ्ट पे जो है बिल्कुल आपके पास शॉप्स आती हैं, तो शॉप आती है। तो ये हो गया। अच्छा, कोई ऐड करना चाहते, कोई शेयर करना चाहते, कोई बात तो कर सकते हैं। आगे भी चलते हैं, टाइम कम रह गया है और ये पार्ट भी थोड़ा सा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। पास द ब्रिज मींस ब्रिज को छोड़कर आगे निकल जाएं, राइट? नहीं, आई थिंक ऐसे नहीं है, क्योंकि मैम आयशा ने लिखा है पास द ब्रिज मींस ब्रिज को छोड़ के आगे निकल जाएं, राइट? नहीं, अगर छोड़ के आगे निकल जाएं मैप को, आ, एक मिनट, कहाँ गया मैप? ये मैप से ये पास द ब्रिज, अगर हम पास डी था, उसने पास द ब्रिज अगर बोला है तो वो तो पहले है ना। ये ब्रिज के बाद तो जी आ रहा है। इसका थोड़ा मीनिंग को डिटेल में देख लेते हैं कि थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। पास द ब्रिज,
हम्म। गो ओवर द ब्रिज एंड क्रॉस द ब्रिज, अच्छा अच्छा। ये देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गो ओवर द ब्रिज एंड पास द ब्रिज एंड क्रॉस द ब्रिज? गो ओवर द ब्रिज ठीक है, क्रॉस द ब्रिज ठीक हो गया, ये मीनिंग हो गई आई हैव टू, ये तो समझ आती है। आई हैव टू गो ओवर द ब्रिज टू गेट टू स्कूल, आई हैव टू क्रॉस द ब्रिज टू गेट टू स्कूल, they can both be used to in the same way. However, pass the bridge implies you are not using the bridge. I have to pass the bridge so I don't go wrong way. ठीक हो गया। ये काफी अच्छी एग्जांपल ये हमें मिल गई है यहाँ पे। आ, मैं मायशा होप सो समझ आ गई होगी और बाकी सबको भी। मुझे भी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हो गई कि पास द ब्रिज और पास द वॉल्स और पास द टावर, इस तरह की ये वर्डिंग बहुत यूज कर रहे हैं वॉइस में। तो ये देखें, डी हो गया हमारे पास ठीक। ओके हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके ओके, 21 से, हाँ 21 का देखते हैं। हाउ विल रोजी एंड मार्टिन इंट्रोड्यूस देयर प्रेजेंटेशन? हाँ, इंट्रोडक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल ही उसने बात कर ली थी वो, मार्टिन ने। रोजी का जो है ना एक जो आइडिया था, और सॉरी थॉट थी, वो मार्टिन जो है वो उसके साथ ही एग्री हो गया था। वो मतलब मैं फिर बाद में ये भी लगाने लगा था, अच्छा हुआ मैंने ये नहीं लगाया, क्योंकि ये मार्टिन जो है ये हाईलाइट नहीं हो रहा, खैर, लेकिन ए ऑप्शन में लगाने लगा था। लेकिन वो मार्टिन पे कहता है कि रोजी मतलब आपका जो, आपकी जो बात है उसी के साथ जाएंगे, तो वो थी विद द टाइमलाइन शोइंग द व्हेन वूली मैमथ्स लिव्ड। अच्छा, 22 का जो है, व्हाट वाज सरप्राइजिंग अबाउट द मैमथ टूथ फाउंड बाय रसल ग्राहम? ये गलत हुआ है मेरा। इट वाज नॉट एज ओल्ड एज मैमथ रिमेन्स फ्रॉम एल्सवेयर। सो इसका जो है, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो कर सकता है, वरना ये इसका सही आंसर था। इट वाज एन ओल्ड। अच्छा, मेरी तरफ से ये है अभी कि ये वाला टेस्ट, या मतलब आप लोग अगर देखना चाहते हो रिपीट करें, अपने पास ये वेबसाइट भी है, वॉइस वगैरह आप दोबारा रिप्ले करके सुन सकते हैं। हम जल्दी से ना, क्योंकि टाइम कम है, आंसर्स देख लेते हैं कौन कौन से सही थे कौन से गलत थे। The student will use an animated diagram to demonstrate how mammoths became isolated on island. ठीक हो गया, ये coexisted का गलत है मेरा, वो नहीं था, became isolated on the island। ये बात हुई थी वो सेपरेशन की, आइलैंड और मेनलैंड की जो सेपरेशन की बात हुई थी, बस वहीं पर ही मेरे ख्याल में ये फिर आंसर था, जो कि मैं थोड़ा गेट नहीं कर पाया। तो अच्छा, according to Martin, what is unusual about the date of mammoth's extinction on the island? ओके। हाँ, ये थोड़ा मैंने तुक्का सा लगाया था, लेकिन ये ठीक हो गया है। तो नहीं आप लोगों ने बिल्कुल नहीं सही जाना। बता रही हो। नहीं नहीं, ये सर जी जी। एग्जैक्ट इन्होंने कह दिया था कि इन्होंने कितना एक्यूरेट ना वो एस्टिमेट किया है, जो जो ईयर्स या टाइम जो भी है ना, ये हाँ बिल्कुल ना फर्स्ट जैसे एंड पे लास्ट में इसने कहा था कि सबसे कंक्लूजन में आने के बाद, तो जी जी। ऊपर वाला बीच में हुआ कि मैंने भी लास्ट वाला किया था, क्योंकि लास्ट में ना 23rd में इन्होंने लास्ट में ये बात बोली थी, लास्ट वाली लाइन जो आपने भी क्लिक की है ना, ये बोल के फिर शिफ्ट हुए थे 24th पे। तो ट्वेंटी अच्छा। फोर्थ में तो मतलब शायद लास्ट इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो इजीली इन्होंने क्लियरली बता दिया होता है कि ये एंड पे हुआ है या ये ऐसे, तो हाँ ये इन्होंने पहले हाँ हाँ, कर दिया कि ये ये जो, ना हाँ, एक्यूरेट, एक्यूरेट से ना एग्जैक्ट वो आ गया था कि एक्यूरेटली इन्होंने इस चीज को वो किया है, जो टाइमिंग्स बताई है कि किस टाइम पे क्या हुआ है। अच्छा हाँ, ये बात आपने जो की है ना, ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है शायद ये इजी होता है, बिल्कुल ऐसा होता भी है, ये इजी होता है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन, व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट डेट ऑफ, मैं वैसे मतलब बता रहा हूँ, मैं वैसे तुक्के नहीं लगाता, बट ये मैंने जल्दी से बस लगा दिया ऐसे ना रैंडमली, वो ठीक हो गए। लेकिन बात हुई थी एग्जैक्ट, टाइमिंग की बात हुई थी, मैं बाद में कंफ्यूज था कि पता नहीं इसका कुछ और, लेकिन ठीक है, आपने एक्सप्लेन भी किया है, थैंक यू सो मच। सो उसके साथ हम आगे जल्दी से ये भी देख लेते हैं। इन अच्छा, हमने इसको ये देखना था कि मतलब मैच करनी थी ये वाले जो ए बी सी जो ऑप्शन दिए हुए एक्शंस। इंट्रोडक्शन जो है वो ई करेक्ट हो गया है, मेक डिटेल नोट्स, डिस्कवरी ऑफ मैमथ टूथ, ये सारे मैंने गेस लगा दिए थे रैंडमली, बस ये गलत ही हो गए हैं तकरीबन। डिस्कवरी ऑफ मैमथ टूथ, ये था डी।
अब डी देखते हैं, कॉन्टेक्ट वन ऑफ द रिसर्चर्स। ठीक है, रिसर्चर्स की बात हुई थी, यहीं पर ही हुई थी। बस वो ये है कि ये देखें इन्होंने ये इतनी जल्दी जो है ना, बीच बीच में जैसे इन्होंने डिस्कवरी ऑफ मेमथ की बात की ना, जल्दी से ये फिर इस तरह से आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपने ये इन ऑप्शंस, अब ये ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। एक काम जी किया सर, जा सकता है कि हाँ इंट्रोडक्शन हाँ। का था, जैसे इंट्रोडक्शन में इन्होंने किया कि रिड्यूस मतलब विजुअल इनपुट्स की पहले बात की थी इंट्रोडक्शन का, कि लग रहा था कि कहीं बी ना हो, फिर लेटर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डिटेल्ड में नोट्स जो होंगे ना वो होंगे, तो वो कह रही थी ओके राइट, मतलब कि डिटेल में जो हम्म नोट्स है वो, तो यानी कि फिर वो अदर ऑप्शन चूज की थी, यानी कि वो होगी थी हम्म करेक्ट। तो ये हो जाता है हम्म, रिसर्चर्स पे ना, इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में बोला है, तो सेकंड ये वाला तो ठीक हाँ। हो गया, बस अभी ना थर्ड और फोर्थ में हम्म। थोड़ा सा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो यानी ये है ठीक कि है। आप बेशक देख टाइम तो शायद। हाँ ठीक है, टाइम हमारा हो गया है तकरीबन कंप्लीट। ये ऑप्शंस जो हैं वो आप लोग मैं ये जो है ना बात करना चाहूँगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से अगर बात की जाए इनकी, तो वॉइस एक ही दफ़ा प्ले होनी है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कंसंट्रेशन की सबसे ज़्यादा इसमें जो है ना बात है। साथ में ये जो जो हमने ऑप्शंस लगाने होते हैं, किसी के पास है टिप्स एंड ट्रिक्स वो शेयर कर सकता है यहाँ पे भी और स्लैक पे भी। लेकिन ये है कि ये ऑप्शंस अच्छे से रीड कर लें, इनका मीनिंग देख लें, अपने दिमाग में बिठा लें इनके मीनिंग, ताकि ये गलत ना हो। अब ये काफ़ी इस तरह एक तो कंसंट्रेशन ना रहे, तो ये इसी तरह गलत हो सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये पार्ट 4 में भी इस दफ़ा आज ये हुआ है कि काफ़ी स्पीडीली गए हैं हर चीज़ के ऊपर, और थोड़े से मुश्किल अल्फाज भी थे बीच में। तो ये जो है ना ध्यान रखना है। वैसे पार्ट 4 ये गलत नहीं होता इतना जितना अभी ये मेरे से मेरे साथ हो गया है। बट ये जो है ना आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है ये निकल ना जाए। इस दफ़ा थोड़ा वॉइस जो थी वो स्पीड में थी। कोशिश करें एक एक दफ़ा ही मतलब एक दफ़ा ही फ्लो में सुने, बार बार आंसर बार बार रिपीट करके जो है वो आप ये ना करें कि मैं आंसर ठीक कर लूँ रिपीट करके वॉइस। आप चले जाएं एक दफ़ा पहले पूरे मॉक टेस्ट से, फिर आप देख लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कोऑपरेटिंग विद मी, एंड वी विल मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। थैंक यू सो मच सर नजमी, अल्लाह हाफिज। अब मीटिंग एंड कर दें सर उबैद आप अगर